नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक और एज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस एज का नाम है न्यू क्लासिकल एज, और इस एज को अगस्तन एज भी कहा जाता है। इस एज की शुरुआत हुई थी 1702 में और इस एज का अंत हुआ था, खात्मा हुआ था 1744 में। अब इस एज की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो एज थी वो थी रेस्टोरेशन एज, जो कि ऐसी कहानियों से भरी पड़ी थी जो कि सिडक्शन से रिलेटेड थी, रेप से रिलेटेड थी, लव ट्रायंगल से रिलेटेड थी, बहुत सारे अफेयर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में थी। लेकिन अगस्तन एज में क्या होता है कि लिटरेचर जो है वो बहुत ही क्लासिकल बन जाता है, सेंसिटिव बन जाता है। और लिटरेचर इस टाइम के जो राइटर्स रहते हैं वो दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री फॉर्मिंग द सोसाइटी। देखिए दोस्तों, ऐसे हुआ था कि जब प्यूरिटन आए थे, जब प्यूरिटन बने थे, तब उस टाइम क्या हुआ था कि प्यूरिटन्स ने सभी तरह की शराब पे, मौजों पे, कोर्ट हाउसेस पे, कॉफ़ी हाउसेस पे, इन सभी पे बैन कर दिया था और बिल्कुल रिलीजियस काइंड ऑफ थियोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दी थी उन्होंने उस टाइम पे इंग्लैंड में। लेकिन जैसे ही वहाँ के लोगों का राज्य ख़त्म हुआ 1660 में, जब प्यूरिटन्स गए, तब वहाँ के लोगों ने देखा कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, और कि फ्रांस और जो बाकी के आसपास के यूरोपियन देश हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, दे वर क्वाइट लिबरेटेड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी आज़ादी का फ़ायदा उठाने का शुरू किया। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बिहेव किया जैसे कि वो जेल से बाहर निकले हैं। देन दे स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ अफेयर्स एंड देन राइटिंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, तो बहुत ही अलग तरह की बुक लिखते थे। ठीक है, इस टाइम पे एक राइटर थे अर्ल ऑफ रोचेस्टर, जो कि एक नोबल मैन थे, लेकिन उन्होंने एक सोडोमी वर्क लिखा था जो कि होमोसेक्सुअल या फिर गे रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके का लिटरेचर लिखा जा रहा था, स्पेशली रेस्टोरेशन एज में। ठीक है, तो उस टाइम पे चार्ल्स लैम्प जो थे, एक राइटर थे, उन्होंने रेस्टोरेशन लिटरेचर को आर्टिफिशियल लिटरेचर कह के भी पुकारा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि रेस्टोरेशन एज में जो है लिटरेचर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लिटरेचर बहुत ही बेकार लिटरेचर था उस टाइम पे। और इसीलिए जब न्यू क्लासिकल एज के राइटर आए, जब प्रिंसेस एन फाइनली क्वीन बनी इंग्लैंड की 1702 में, तब उन्होंने वहाँ के जो राइटर थे उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब वो जो है वो क्लासिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो राइटर जैसे कि पोप, एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने होमर, वर्जिल, होरेस और अदर जो वहाँ के जो राइटर थे उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ का वो क्या थे, वो सिर्फ स्टाइल कॉपी कर पाए, लेकिन उनका जो थॉट थे, जो विचार थे, वो तो आप कॉपी नहीं ना कर सकते किसी का, आप स्टाइल कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत ही आर्टिफिशियल सा लिटरेचर लगा, जिस वजह से इसको न्यू क्लासिकल एज या फिर स्यूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार तो अलेक्जेंडर पोप ने उनको प्रेज करते हुए ये भी कहा था कि टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी देम मीन्स द क्लासिकल राइटर्स। Pope also said the same thing, that let Homer's work your study and delight, read them by day, meditate by night। ठीक है, तो यहाँ पे होमर ही स्टैंड्स फॉर ऑल द क्लासिकल राइटर्स। ठीक है, तो इस एज को एज ऑफ पैम्पलेट राइटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में ही लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया था, और इसीलिए इस एज को द एज ऑफ न्यूज़पेपर, एज ऑफ मैगजीन्स एंड समटाइम्स सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी ऑल्सो कहा जाता है। ठीक है, अगस्तन एज जो थी ये एक ऐसी एज थी जिसमें कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज काफ़ी हुई थी। इससे पहले जो था लोग रिलीजियस इशू में ही कहीं ना कहीं खोए पड़े थे। लेकिन इस एज के आते ही यहाँ पे हमें दो पार्टीज जो है वो इमर्ज होती दिखाई देती हैं, जो कि थी द बिग्स एंड द टोरीज। जो टोरी थे वो अपर स्टेटस चर्च रिलीजियस पीपल थे, जैसे कि बिशप, मॉन्क्स, पोप्स, और जो बिग्स थे ये लो चर्च अथॉरिटीज थे, जैसे कि पार्सन या फिर पार्टनर। अब दोस्तों, जो अगस्तस किंग थे, जो रोम के किंग थे, वो ग्रेटेस्ट किंग थे उस टाइम के, अपने टाइम के। और अगस्तस जो थे वो जूलियस सीजर के नेफ्यू थे, उनके भांजे थे। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि जैसे कि शेक्सपियर ने जूलियस सीजर पे एक बुक भी लिखी है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि जूलियस सीजर जो था एक बहुत ही बढ़िया राजा था, लेकिन उसको उसके दोस्तों के द्वारा, जैसे कि ब्रूटस और अदर्स ने मिलकर उनको मरवा दिया गया था, जैसे कि हमें जूलियस सीजर पढ़ने से पता चलता है। लेकिन जब जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, तब लोगों को पता चलता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इसी के कारण वहाँ पर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ टाइम के बाद अगस्तस सीजर वहाँ के किंग बनते हैं, और वहाँ पर वो इस्टेब्लिश करते हैं पीस, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, लिटरेचर, नॉलेज, एनलाइटनमेंट इन हिज सोसाइटी वंस अगेन। ठीक है, इसीलिए ये रीज़न किया जाता है कि जो
क्वीन एन है या फिर जॉर्ज सेकंड जो थे, जो इस एज के दौरान राजा थे, उनको कहीं ना कहीं किंग अगस्तस के साथ कंपेयर किया जाता है। अगस्तस सीजर ने अपने टाइम पे एक मूवमेंट लॉन्च करी थी जिसको कहा जाता था द पैक्स रोमाना, विच मीन्स पीस ऑफ रोम। तो इसी चीज़ से एम्पायर होके जो जेम्स वन थे, जो किंग जेम्स वन थे, जब वो किंग बने थे, उन्होंने भी सेम काइंड ऑफ मूवमेंट लॉन्च करी थी जिसे कहा गया था द पैक्स ब्रिटानिया। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करते थे किंग अगस्तस के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इंग्लैंड वंस अगेन ऑर्डर में आया था। ठीक है, अब हमें पता चलता है कि जो बिग्स और टोरीज थे, इनके आपस में रेगुलर इशू चलते रहते थे। ठीक है, जब 1702 में क्वीन बनी, प्रिंसेस एंड क्वीन बनी, तो वो जल्दी ही छोटी ही एज में मर गई थी 1714 में। ठीक है, तो उसके बाद एक नए राजा बने जो कि जॉर्ज वन थे। वो डिप्लोमेटिक मैन थे, उन्होंने बिग्स और टोरीज दोनों को सपोर्ट किया, लेकिन 1726 में उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद जॉर्ज सेकंड किंग बनते हैं 1726 में, वो सिर्फ बिग्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी भी डेथ हो जाती है 1760 में। ठीक है, और इसके बाद जॉर्ज थर्ड किंग बनते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अकेले टोरीज को ही सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जॉर्ज थर्ड को जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया है रोमांटिक राइटर्स के द्वारा। जैसे कि पीवी शेली ने उनको अपने वर्क रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था जॉर्ज थर्ड वाज एन ओल्ड मैड डिस्पाइस्ड किंग। ठीक है, इसके साथ ही इस एज को एज ऑफ स्कैंडल्स भी कहा जाता है। इसे टी.एच. वाइट ने इस एज को एज ऑफ स्कैंडल्स कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस एज के बारे में कहा है कि दिस एज वाज आर इंडिस्पेंसिबल एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। ठीक है, और इसी एज में जो 3 कंट्रीज थी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये इकट्ठी आई थी और इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना करी थी 1707 में, जिसे कि यूनियन ऑफ द क्राउन भी कहा जाता है। और इसी एज में हमारा फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर भी प्रिंट हुआ था, जो कि 1702 में शुरू हुआ था और जिसे द डेली करंट कहा गया था। तो दोस्तों, अभी हम इस एज के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद वी सो 2 डिस्टिंक्ट टेंडेंसीज इन प्रीवियस गवर्नमेंट्स लिटरेचर, प्रोपेंसिटीज टुवर्ड रियलिज्म इन सब्जेक्ट मैटर एंड ए डिजायर टू पॉलिश एंड रिफाइन एक्सप्रेशंस। These inclinations remained throughout the Augustan Age, as seen in Pope's poetry, which perfected the couplet, and Addison's prose. A third tendency is the prominence of satire, which stems from the terrible combination of politics and literature. And it is often called the age of Queen Anne. The reign of King Augustus is the classic or golden age of Rome. The generation of Dante is the classical age of Italian literature. The age of Louis XIV is the French classical age, and the age of Queen Anne is often called the classical age of Queen Anne. जो अगस्तन से इनको द ग्रब स्ट्रीट राइटर्स भी कहा जाता था। ग्रब स्ट्रीट दोस्तों एक नोवेल का नाम भी है, जिससे कि जॉर्ज गिसिंग ने लिखा है। जॉर्ज ग्रब स्ट्रीट जो है, ये एक टर्म है उन राइटर्स के लिए जो लिखते हैं पैसा कमाने के लिए या कि फिर अपना घर चलाने के लिए लिखते हैं जो। ठीक है, 19th सेंचुरी में इन राइटर्स को ऑनर किया गया था और गर्ब स्ट्रीट का नाम जो है वो बदल के मिल्टन स्ट्रीट रखा गया था। अगस्टस सीजर ऑल्सो लॉन्च्ड ए मूवमेंट नोन एज द पैक्स रोमाना, विच मीन्स पीस ऑफ रोम, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी इसके बारे में। इन हिज फेमस वर्क रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, पीवी शैली क्रिटिसाइज हिम बाय सेइंग जॉर्ज थर्ड वाज एन ओल्ड मैड डिस्पाइस्ड किंग। इट इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ स्कैंडल्स। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो बताने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट न्यूज़पेपर की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब अगस्टस नेम इज चूजन बाय राइटर्स themselves who saw in Pope, Addison, Swift, Johnson and Burke the modern parallels to Horace, Virgil, Cicero and all that brilliant company who made Roman literature famous in the days of Augustus। तो दोस्तों अब इस एज के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो है हमारे अलेक्जेंडर पोप, जिनका बर्थ जो है वो 1688 में हुआ था और डेथ इनकी हो गई थी 1744 में। Pope wanted to marry a lady called Mary Wortley Montague. She was a highly educated girl from the blue stocking. Blue stocking is a term applied to 18th century fashionable women। तो जब पोप जो है इस लेडी को प्रपोज करने जाते हैं तो वो इनकी इंसल्ट कर देती है। ठीक है, तो जब वो इनकी इंसल्ट कर देती है एंड देन वो वापस आते हैं घर पे, ही फेल्ट वेरी बैड, और वो उनके ऊपर एक पोइम लिख देते हैं। ठीक है, वो बहुत ही फेमस पोइम है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ लेडी से रिलेटेड ये पोइम है। ठीक है, तो आप उस पोइम को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छी पोइम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जॉन स्विफ्ट कॉल्ड हिम पेपर सेविंग पोड। इट इज़ बिलीव दैट जोनाथन स्विफ्ट वाज अ फैन ऑफ पोप्स राइटिंग सटाइल एंड ही सेड व्हाट आई वुड फिक्स इन 6 lines, पोप कुड फिक्स इन 2 lines। Now, being debarred by his religion from many desirable employments, he resolved to make literature his life work, and in this he resembled Dryden, who
he tells us was his only master, though much of his work seems to depend on Boileau, the French poet and critic. Voltaire called him the best poet of England and at present of all the world. तो दोस्तों अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन द रेप ऑफ द लॉक जो है जिसे 1712 में पब्लिश किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको मैं तो चाहूँगा कि आप डिटेल में पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है तो फिर आप इसकी डिटेल्ड समरी तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इसीलिए इसमें हम बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। लेकिन कभी अगर टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा द रेप ऑफ द लॉक पे, ठीक है। सो द रेप ऑफ लॉक्स फर्स्ट पब्लिकेशन हैड 2 cantos. In 1702 the first 2 cantos were published without the permission of Arabelle Fermor, but in 1714 3 cantos were published with the permission of Arabelle Fermor. In 1717, Pope added a new character to the story. Her name was Clarissa. She is the mouthpiece of Pope. All the social comments are made by her only. When Pope wrote the letter to apologize, he also mentioned that he was using Rosicrucian mythology. It was taken from Henry de Montfaucon de Villiers, Le Comte de Gavales. This deals with the underworld mythology. For the first time, it was used in literature. William Hazlitt has called this book a perfect mock epic. Now we will discuss some important characters of this epic. The most important characters of this epic are Lord Baron. He is the real life Lord Peter, very delinquent and proud. Pope welcomed him with the opening line, resolved to win, he meditated the way, by force to ravish or by fraud to betray. Next we have Belinda. Belinda being a lady, she is given second priority by Pope. Belinda is real life Arabella Fermor. She has been introduced in the following way. India's glowing gems unlocks, all Arabia weeps from the yonder walks. Now some minor characters are there. First of all we have Sir Plume, who is Belinda's brother. Shock, Belinda's lapdog. Paul, Parrot. Then we have Thalestris, Belinda's friend who keeps insulting her. Next we have Clarissa, Pope's mouthpiece and does all social commentary. Next we have Suppline, she is the bad-tempered queen. And then we have Gnome, a mischievous spirit. Ariel, head of supernatural machinery. Sylphs, the spirit of air. Nymphs, the spirit of water. And Salamanders, the spirit of fire. Now we will discuss some famous lines of this epic poem. First of all, we have opening line. What dire offense from amorous causes springs, what mighty contest rise from trivial things. Again he criticizes Q and N in the following lines. Hear thou great N, whom 3 nymphs away, sometimes take counsel, sometimes take say. He also criticizes the fashionable woman of the 18th century, damned with faint praise. Another important line is, who breaks a butterfly upon a heel. He talks about his father also in the following lines. Born to no pride, inheriting no strife, nor marrying discord in a noble wife, strangers to civil and religious rage, the good man walked innoxious throng his age. Now we will discuss some other important works written by Alexander Pope. First of all we have Pastorals, then Winster Forest, and we have Masiha. Titles are enough, more than enough of these books. Next we have Essay on Criticism. You need to go through a brief summary of this particular text. It sums up the art of poetry taught first by Horace, then by Boileau, and then in the 18th century classicist. It is written in heroic couplet. It includes some famous lines. First of all we have, for fools rush in where angels fear to tread. Next we have, to err is human, to forgive divine. A little learning is a dangerous thing. And last, not the least, know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. Next we have Elius to Abelard, moral epistles. And then we have the Dunciad, which was published in 1728. It is divided into 2 books known as the Old Dunciad, which was published in 1728, and the New Dunciad, which was published in 1743. Here he criticizes Lewis Theobald and Coliseber. Next we have Moral Epistles. It is a political satire written at Twickenham, modelled after Horace, and he revenged upon all his critics in the bitter abuse of the Dunciad. Now we will discuss some other important works by Pope. Here we have Pope's translations. He translated the Iliad and Odyssey, the former of which was financially his most successful. The criticism of scholar Bentley was most appropriate when he said, it is a pretty poem, but you must not call it Homer. Pope translated the entire Iliad and Odyssey, and the latter work was finished by 2 Cambridge scholars, Elijah Fenton and William Broome, who imitated the mechanical couplet so perfectly that it is difficult to distinguish their work from that of the greatest poet of the age.
Next we have essay on man. The purpose of this essay is, in Pope's words, to vindicate the ways of God to men. And as there are no unanswered problems in Pope's philosophy, the vindication is perfectly accomplished in four poetical epistles concerning man's relations to the universe, to himself, to society, and to happiness. Next we have epistle to Dr. Arbuthnot. You need to go through the brief summary of this particular poem. Next we have Atticus. He criticizes Joseph Addison by calling him Atticus in this particular poem. Next we have Peribathos, or The Art of Singing and Poetry, which was published in 1728. It is a short story. Next we have Moral Essays, which was published in 1735. Pope was so great that his death in 1744 was considered the end of the Neoclassical era. He was buried at Twickenham, his religion preventing him from the honor of a resting place in Westminster Abbey, which was certainly his due. Next we have Jonathan Swift, who was born in 1766 and died in 1745. John Dryden says that the true end of satire is the amendment of vices by correction, in the prologue to the reader in his Absalom and Achitophel. There are three types of satire: Menippean satire, Horatian satire, and juvenile satire. Jonathan Swift is known for juvenile satire. He was the cousin of John Dryden. Jonathan Swift, he was the cousin of John Dryden. When Swift started writing poetry, he submitted to Dryden and sought his advice. Dryden gave him the best advice: cousin Swift, you will never be a poet. So he never wrote poetry after that. He started writing satires. Now we will discuss some important works by Swift. First of all, we have his most important works, that is Gulliver's Travels, which was published in 1726. It is one of the best allegorical works, where we have Sir Lemuel Gulliver, a physician by nature. Swift claimed that he wrote Gulliver's Travel to vex the world rather than divert it. John Gray remarked, it is universally read from the cabinet council to the nursery. It is believed that Gulliver's Travel was written under the influence of mad, retarded behavior. He has also written Letters to Stella. It is also known as a Journal to Stella. It was published collectively from 1710 to 1713. Here Stella is Esther Johnson, to whom he dedicates his letters. Next he has written Drapier's Letters. These letters were written under the pseudonym M.B. Drapier to avoid controversy or political pressure. There are 7 letters published from 1724 to 1725. Next we have verses on the death of Dr. Jonathan Swift. The Dean of St. Cathedral Church, also known as Champion Liberty, wrote this in 1731 and published it in 1739. Next we have Battle of the Books. It is very important book and you should read the detailed summary of this book. Next we have Tale of a Tub. It is a very important book and you need to read this book actually. You need to buy and read this book. At least detailed summary of this book is required. Next he has written The Modest Proposal. The full title is A Modest Proposal for Preventing the Children of the Poor People in Ireland from being a burden to their parents or country and for making them beneficial to their public. This was written in response to Daniel Defoe's essay The Generous Projector, or a friendly proposal to prevent murder and other enormous abuses by erecting a hospital for foundling and bastard children. Henry Fielding's Tom Jones was also a foundling. Next he has written Bickerstaff Almanac, Elegy of Mr. Partridge, and Vindication of Isaac Bickerstaff. This is a kind of trilogy, you could say, and this is not that much important. Now we will discuss about Joseph Addison, who was born in 1672 and died in 1719. He was not only a pamphleteer, a newspaper writer of periodicals, but also a member of parliament. Samuel Johnson says, if you want to command the English language, give your days and nights to Joseph Addison. Now we will discuss some of his works. First of all, we have Account of the Greatest English Poets, published in 1693. It was written while he was a fellow of Oxford University. Next we have The Peace of Ryswick, published in 1697. With its kindly appreciation of King William's statesmen, brought him into favourable political notice. It brought him also a pension of £300 a year, with a suggestion that he travel abroad and cultivate the art of diplomacy, which he promptly did to his own great advantage. Next we have the campaign. It celebrates the victory of the Battle of Blenheim, which took the country by storm. In this poem, Addison made Marlborough direct the battle from the outside, comparing him to an angel on the whirlwind.
Next, he has written Rosamond, published in 1707, Cato, a play, published in 1713, and then finally The Drummer or The Haunted House, published in 1715. Now we will talk about Richard Steele, who was born in 1672 and died in 1729. He has written A Christian Hero, published 1701, The Funeral, published 1701, Lying Lover, 1703, Tender Husband, and Conscious Lover. And now we will discuss about newspapers of this age, which was mostly written by Steele and Addison. The first ever newspaper was the Daily Current, published in 1702. Along with this, there were a few more newspapers: the Postboy, the Postman, the Review, the Evening Chronicle, Daily Gadgets, and Watchman. Daniel Defoe was the first man to write a review, also known as the father of review or reviewers. Francis Joffrey was the head of Edinburgh Review, and he is known as the father of modern reviewers. Richard Steele started a newspaper, Tatler, in the month of April. In 1709, it was a tri-weekly small folio sheet paper. It was released on Tuesday, Thursday, and Saturday, and it sold for a penny a copy. In January 1711, Tatler came to an end. There were a total of 180 essays in Tatler, out of which 36 were written by Addison, 42 were written by Steele and Addison, and the remaining one were written by other writers. The general purpose of this paper is to expose the false arts of life, to pull off the disguises of cunning, vanity, and affectation, and to recommend a general simplicity in our dress, our discourse, and our behavior. After 2 months, Steele and Addison started the magazine Spectator in March 1711. It is believed that on the very first day they sold 60,000 copies in London only. Out of 550 essays published in Spectator, Steele wrote approximately 236 essays, Addison wrote 274 essays, and the remaining essays were written by Pope, Arbuthnot, and others. It ended in 1712, and the reason were cited as because Addison became more famous than Steele, and they had some issues among themselves, and so they stopped writing or selling this magazine. After this, Samuel Johnson came with his magazines Rambler and Idler in 1752 and 1758 to 1760 respectively. They also formed a Spectator Club. It was the idea of Addison. It is a group of 6 people. They were imaginary characters developed on paper. They are Sir Andrew Freeport. It stands for business class people. Next we have Sir Roger D. Coverley. It is a pseudonym of Steele, stands for the rich people and landlords. Next we have Captain Sentry. It stands for the army, border people, and it deals with issues with other countries. Next we have Will Honeycomb. It is he is a middle-aged middle class man, and he stands for most of the population of London. Next we have the Mr. Spectator. He is Addison. He is a newcomer who looks at everything and his views about the cities. Finally we have a widow lady. Her name is not mentioned, but it is believed that she was Hannah More. तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं. आपको आई होप कि ये एज न्यू क्लासिकल एज या फिर अगस्तन एज समझ आ गई होगी. अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा. वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा. नई वीडियो जल्दी लेके आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.